बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS601 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए फ़ाइल बनाई है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ अ डैश लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर। Next question is in dash each station is allocated a time slot during which it can be sent data. NDMA, CDMA, TDMA। इसका राइट ऑप्शन है TDMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the context of Ethernet implementation, maximum medium length of 10 pairs F was dash meter, 500 meters, 1000 meter, 2000 मीटर। इसका राइट ऑप्शन है 2000 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ स्विच वाइड एरिया नेटवर्क based on the cell relay protocol designed by the ATM firm ATM, FTMA, TMM। तो इसका राइट ऑप्शन है ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है BLSR स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल लाइन स्विचिंग रिंग, bi-directional limit switching ring, none of these। इसका राइट ऑप्शन है bi-directional line switching ring। नेक्स्ट क्वेश्चन है BLSR use dash rings totally, 4 rings, 5 rings, 6 ring। इसका राइट ऑप्शन है 4 rings। Next question is in dash collisions are avoided by the differing transmission even if the channel is ideal. The slot frame, the development frame, the interference space। इसका राइट ऑप्शन है the slotted frame। What does LATA stand for? Local area transmission area, local area transport areas, local access transport areas। इसका राइट ऑप्शन है local access transport areas। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSR stand for unidirectional path switching ring, union path switching ring, none of given option। इसका राइट ऑप्शन है unidirectional path switching। नेक्स्ट क्वेश्चन है linear network has a dash types, 2, 3 types, 4 types। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 types। ring network has dash types, 2 types, 3 types, 4 types। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 types। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हैज dash types, 2 types, 3 types, 4 types। इसका राइट ऑप्शन है 3 types।
Next question is Education Protocol APS. AP has dash types, two types, three types, four types. इसका right option है two types. Next question is traditionally dash protocol have been defined for the data link layer to deal with the flow and error control. Two protocol, three, four. इसका right option है four protocol. Next question is Dash is a simple network which is made up of an STS, Muse and DMuse and a couple of generators. Multi-point network. Number 2, point of point to point. Number 3, none of these. इसका right option है point to point. Next question is Dash can be used as a high speed backbone carrying loads from other networks such as ATM or IP. Sonet network, ring networks, linear network. Next question is there are Dash basic nodes for the propagation of light in fiber optic cable. 2, 3, 4. इसका right option है 2 basic mode. Next question है CSMA CD and CSMA CA are the part of Control Access Protocol, Mutual Access Protocol, Random Access Protocol. इसका right option है Random Access Protocol. Next question है Aloha, the earliest random access method was developed in earlier Dash. 1960, 1980, 1970. इसका right option है 1960, 1970. Next question है Internet commercially introduced in 1960, 1980, 1970. इसका right option है 1980. The ethnic LAN was developed in the 1960, 1980, 1970. इसका right option है 1970. Next question है Dash eliminates collisions and connect heterogeneous devices. Hub eliminates, repeaters eliminates, switch. इसका right option है switch eliminate collisions and connect heterogeneous devices. Next question है Dash creates looping problem in learning switch. Unicast, multicast, procast. इसका right option है procast creates looping problem in learning switch. Next question है the term FTTC stand for fiber to the curb front technology terminal connection, fiber terminal transmission commissions. इसका right option है fiber to the curb. Next question है multiple access protocol is divided into 4 categories, 2 categories, 3 categories.
इसका राइट ऑप्शन है टू थ्री कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है gigabit Ethernet has a two distinctive approaches for the medium dash: half duplexes, full duplexes, all of the these। तो इसका राइट ऑप्शन है all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDLC provide two common transform modes that can be used in different configuration: normal response mode, A scenarios, balance mode, all of these। इसका राइट ऑप्शन है all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is the channel access medium method used in some multiple access protocol: frequency division multiple access, number 2 code division multiple access, number 3 none of these। तो इसका राइट ऑप्शन है frequency division multiple access is a channel access method used in some multiple access protocol। Next question is dash is the process where the computer or controlling device wait for an external device to check for its state: pooling, number 2 reservation, talking passing। इसका राइट ऑप्शन है pooling is a process where the computer or controlling device wait for external device to check for its state। Next question is in the dash method a station need to make a reservation before sending data: pooling, number 2 reservation, number 3 talking passing। तो इसका राइट ऑप्शन है reservation। Next question is in pure alhoa the valuable time is dash the frame transmission time: 2 times, 3 times, 4 times। इसका राइट ऑप्शन है 2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash was used as a medium in 10 PST: thick coaxial cable, thin coaxial cable, twisted pair cable। इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन dash encoding we use 3 level: positive, 0 and negative, polar, नॉन पोलर और बाइपोलर। तो इसका राइट ऑप्शन है बाइपोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन: 2, 3, 4। इसका राइट ऑप्शन है 2। आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए करंट फाइनल टर्म के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज यूज्ड एज अ मीडियम इन 10 बेस टी: थिक कोएक्सियल केबल, थिन कोएक्सियल केबल। तो इसका राइट ऑप्शन थिक कोएक्सियल केबल इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डेटा रेट इन द अपलोडिंग डायरेक्शन इज टेल डैश: नंबर 1 26.6 kbps, नंबर 2 33.6 kbs, नंबर 3 36.6 kbs। तो इसका राइट ऑप्शन है 33.6 kbs। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश ईच स्टेशन इज फोर्स्ड टू सेंड अ फ्रेम ओनली एट बिगिनिंग एट टाइम स्लॉट: नंबर 1 प्योर एल्होआ, नंबर 2
slotted aloha, नंबर 3 फर्गामेंट अलोहा। तो इसका राइट ऑप्शन है स्लोटेड अलोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश each station send a frame whenever it has a frame to send. Number 1 pure aloha, number 2 slotted aloha, number 3 pergament aloha। तो इसका राइट ऑप्शन है प्योर अलोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा रेट ऑफ ए t-1 line is dash। Number 1 2.544 mbps, number 2 1.544 kbs, number 3 3.544 kbs। तो इसका राइट ऑप्शन है 1.544 kbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट स्विच नेटवर्क हैव dash efficient but dash delay compared to the packet switch network, high, minimal, high and high, low and minimal। तो इसका राइट ऑप्शन है लो एफिशिएंसी होता है और बट मिनिमल डिले कंपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेगरी 5 UDP cable is used for data transmission of up to dash 100 Mbps, number 2 200 Mbps, number 3 250 Mbps। तो इसका राइट ऑप्शन है 100 Mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट स्टैंड फॉर सिनेरियो ऑप्टिकल नेटवर्क, सिनेरियो ऑपरेशनल नेटवर्क, स्ट्रीम ऑप्टिकल नेटवर्क। तो इसका राइट ऑप्शन है सिनेरियोस ऑप्टिकल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट एथरनेट हैज अ डेटा रेट ऑफ dash mbps। नंबर 1 10 mbps, नंबर 2 100 mbps, नंबर 3 1000 mbps। तो इसका राइट ऑप्शन है 100 mbps। फास्ट एथरनेट हैज अ डेटा रेट ऑफ 100 mbps। नेक्स्ट क्वेश्चन है multiplexing is a set of techniques that allow simultaneously tx of multiple signal across dash data link। First option single data link, second option multiple data link, third option single and multi data link। इसका राइट ऑप्शन है सिंगल डेटा लिंक। नीड फॉर एड्रेसिंग मेक्स a scenario TDM efficient for bit or byte dash addition, subtraction, number 3 none of given option। तो इसका राइट ऑप्शन है addition। नेक्स्ट क्वेश्चन है dash take data from one high speed line and breaks it into the portion। Number 1 multiplexing, number 2 inverse multiplexing, number 3 inverse subtraction। तो इसका राइट ऑप्शन है multiplexing data takes data from one high speed line and breaks into the one portion। next question है at the data link layer dash protocol is designed to the handle both flow and error control but communication is one frame at a time। Number 1 simple protocol, number 2 selective repeat, number 3 spot and wait। तो इसका राइट ऑप्शन है spot and wait protocol। next question is which of the following is the example of ITU-T modem standard? T series, X series, N series। तो इसका राइट ऑप्शन है टी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The maximum data rate in the uploading direction is tell dash. Number 1 26.6 kbps, number 2 33.6 kbps, number 3 46.6 kbps. इसका राइट ऑप्शन है 33.6 kbps. Next question is category 5 UTP cable is used for data transmission of up to dash 100 Mbps, 200 Mbps, 250 Mbps. तो इसका राइट ऑप्शन है 100 Mbps. Next question is all the popular fiber optic connector are dash shape, barial shape, circular shape, rectangular shape. इसका राइट ऑप्शन है barial shape. Next question is a traditional telephone line has a bandwidth of dash 2000 hertz, 4000 hertz, 3000 hertz. तो इसका राइट ऑप्शन है 2000 hertz. Next question है to detect 5 errors the humming distance between the each pair of code words should be at least number 1 4, number 2 5, number 3 11. तो इसका राइट ऑप्शन है 11. Next question is error control is a data link layer is a based on dash automatic repeat request, automatic repeat acknowledgement, automatic send acknowledgement. तो इसका राइट ऑप्शन है automatic send acknowledgement. The PNCT connector is a T-shaped device with dashboards. Number 1 2, number 2 3, number 3 option 4 2 3 4. इसका राइट ऑप्शन है 3. The PNC connector is a T-shaped device with 3 ports. Next question है repeater work on dash layer, data link, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर. इसका राइट ऑप्शन है रिपीटर वर्क ऑन नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली द वैल्यू ऑफ kmax इन प्योर alcohol इज dash 10, 15, 20. इसका राइट ऑप्शन है 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है first and foremost function of data link layer is dash farming, flow control, error control. तो इसका राइट ऑप्शन है farming. First and foremost function of data link layer is a farming. Next question है second service dash transmission of frames from the source host to the destination is actually needs some sort of control. Number 1 framing, number 2 flow control, number 3 error control. इसका राइट ऑप्शन है flow control. Next question है there are two types of DLL. DLL stand for होता है data link layer, point to point link, broadcast link, both. इसका राइट ऑप्शन है both. There are two types of data link layer, point to point link, broadcast link. Next question is there are two sub layer of data link layer, data link layer, data link control, medium access control, both. तो आप लोगों के पेपर में इस तरह भी आ सकता है कि DLC स्टैंड फॉर, तो आपने बताना है डेटा लिंक लेयर होता है. MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है.
तो सब टू सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर होता है, ये दोनों ही होते हैं, बोथ डेटा लिंक कंट्रोल होता है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर, ब्रस्ट एरर, नंबर 3 बोथ। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर, ब्रस्ट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash mean that only one bit of given data unit is changed from 1 to 0 or 0 to 1. Number 1 single bit error, number 2 burst error, number 3 both. तो इसका राइट ऑप्शन है सिंगल बिट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is the process of converting digital data to digital signals, line coding, multicast, broadcast। तो इसका राइट ऑप्शन है लाइन कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द एथनिक प्रोवाइड अ डेटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकेंड, गीगाबिट्स एथनिक, स्टैंडर्ड एथनिक, 10 PST एथनिक। तो इसका राइट ऑप्शन है गीगाबिट एथनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A3:3:4 4:5:11 92:F1 is the dash link layer address, broadcast, unicast, multicast। तो इसका राइट ऑप्शन है broadcast। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash was used as a medium in 10 base T, twisted cable, thick coaxial cable, two mode fiber cable। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्विस्टेड केबल was used as a medium in 10 base T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ethnic address is a of dash bytes, 4 bytes, 6 bytes, 8 bytes। तो इसका राइट ऑप्शन है 6 bytes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAC address is a of dash 58, 48, 68। इसका राइट ऑप्शन है 48 बिट्स। यहाँ पे आता है बिट्स 48। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज ऑफ 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वोल्टेज, टाइम, एम्पलीट्यूड। इसका राइट ऑप्शन है एम्पलीट्यूड इज द रेट ऑफ चेंज with respect to time. Next question is, the extra bit added with the original data of error detection correction are called dash, port numbers, redundant bits, process IDs। तो इसका राइट ऑप्शन है redundant bits। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S frames high level data link control are only used to transfer dash information, user data, control, original। तो इसका राइट ऑप्शन है यूजर डेटा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WDM stand for Gross data manipulation, well-length division multiplexing, number 3 none of the given। तो इसका राइट ऑप्शन है well-length division multiplexing। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in block coding we divide our message into blocks of k bits called as dash, code words, number 2 data words, number 3 पासवर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है डेटा वर्ड्स।
Next question is time division multiplexing is used in DASH system. Analog, hybrid, digital. तो इसका राइट ऑप्शन है डिजिटल. Next question is dash are used to exchange section management and control information between connected devices. I-frames, U-frames, S-frames. तो इसका राइट ऑप्शन है U-frames are used to exchange section management and control information between connected devices. Next question is there are three types of addressing: unicast, multicast, broadcast. इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेस होते हैं: यूनिकॉस्ट, मल्टीकॉस्ट, ब्रॉडकास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है collisions are avoided through the use of three strategies: the interframe space, the connection window, acknowledgement. तो इस all of these. तो इसका राइट ऑप्शन है all of these. Next question is CMA CSMA CD is not used in dash ethnic. Fast, standard, gigabit, 10 gigabit. इसका राइट ऑप्शन है 10 gigabit और is not used in ethnic. The amplitude of the digital signal depend upon dash to represent a bit. Phase, wavelength, bandwidth, voltage. तो इसका राइट ऑप्शन है voltage. Next question is the original ethnic technology with the data rate of 10 Mbps is called dash ethnic. Fast, standard, gigabit, 10 gigabit. इसका राइट ऑप्शन है स्टैंडर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनेट नेटवर्क इनटू थ्री कैटेगरीज: mesh networks, ring networks, linear networks and mesh networks. All of these. इसका राइट ऑप्शन है all of these. Following are the example of connecting devices except link layer switches, hub, routers, wire. इसका राइट ऑप्शन है वायर. POP stand for presentation of points, points of points, points of packets, points of presence. इसका राइट ऑप्शन है POP stand for points of presence. Next question is dash is the responsible for the movement of a signal from source to the destination. Path layer is responsible, link layer is responsible, section layer is responsible, photonic layer. इसका राइट ऑप्शन है path layer is responsible for the movement of a signal from the source to the destination. Next question is dash and dash physical layer are the authority of the local and wide area network. Data link, data path layer. Number 2, data link layer. Number 3, data section layer. Number 4, data photonic layer. इसका राइट ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is the particular type of connection. It is responsible for the movement of the signal across a physical line. Path layer,
लिंक लेयर, सेक्शन लेयर, फोटैनिक लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेम सिग्नल अक्रॉस द फिजिकल सेक्शन। नंबर वन पाथ लेयर, नंबर टू लिंक लेयर, नंबर थ्री सेक्शन लेयर, नंबर फोर फोटैनिक लेयर। इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज इक्विवेलेंट टू द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। पाथ लेयर, नंबर टू लिंक लेयर, नंबर थ्री सेक्शन लेयर, नंबर फोर फोटैनिक लेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है फोटैनिक लेयर इज इक्विवेलेंट टू द फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज SUNET standard include four functional layers. Number one, four. Number two, link layer. Number three, section layer. Number four, photonic layer. इसका राइट ऑप्शन है photonic layer. Next question, in context of control signaling network, what does STP stand for? Shield twisted pair, signaling transmission point, signal transfer points, सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर। तो इसका राइट ऑप्शन है सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स।